Let's now see sequence of examining cervical lymph node. First, you have to examine the anterior group of lymph nodes by standing behind the patient. Then flex the neck to relax the fascia. First, feel for submental groove using a single finger. Then palpate bilateral submandibular, then bilateral preauricular, then jugulo-digastric, jugulo-omohyoid, then supraclavicular groove. You can examine pre and paratracheal also. Now posterior group के लिए you have to stand in front of the patient, feel for the post-auricular, then occipital and posterior triangle group of lymph node. Let's now see about supraclavicular lymph nodes and drainage. Supraclavicular lymph nodes can be of two types: right supraclavicular, left supraclavicular. Right supraclavicular drains from right lung and left lung lower lobe. Left supraclavicular drains from left lung upper lobe, also breast, bronchus, bowel, bladder and gonads. Then what is the mechanism of supraclavicular lymphadenopathy? In GI and other malignancies, reflux of tumor cells from the thoracic duct into left supraclavicular node at the junction of thoracic duct and left subclavian. So what happens actually, अगर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या फिर कोई अलग जगह मैलिग्नेंसी हो रहा है, सो उसमें से एक ट्यूमर सेल आके रिफ्लक्स होगा जो कि थोरासिक डक्ट एंड लेफ्ट सुप्राक्लाविकुलर नोड के बीच रहेगा. सो सुप्राक्लाविकुलर लिम्फेडेनोपैथी कॉज करेगा. देन लेट्स सी सम साइंस. ट्रांजियोस साइन ऑफ टेटानी जो कि कार्पोपेडल स्पासम होता है, ट्रांजियोस सिंड्रोम, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इन मैलिग्नेंसी एंड ट्रांजियोस साइन जो कि एनलार्ज्ड हार्ड लेफ्ट सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड अगर होता है तो उसको बोलते हैं, जिसको कि हम वर्चस नोड भी बोल सकते हैं. लेट्स सी सम अदर नेम्ड लिम्फ नोड लाइक वर्चस नोड, it is the left supraclavicular node. Scalene node, sentinel node of bronchogenic carcinoma. To palpate it, you have to relax your neck, then palpate between the two heads of sternocleidomastoid. Then Winterbottom sign. It is the posterior triangle lymph node enlargement seen in early phase of African trypanosomiasis. Now let's see causes of posterior triangle lymph node enlargement. It is scalp infection, measles, rubella, infectious mononucleosis, trypanosomiasis. Node of Woods, jugulo-digastric lymph node enlargement seen in TB when spread via tonsil. Delphian node refers to pretracheal node. Then external Waldeyer ring seen to be enlarged in non-Hodgkin's lymphoma. Berry's node, jugulo-omohyoid lymph node seen in thyroid malignancy. Let's revise all together. Virchois node, left supraclavicular. Scalene node, between two heads of sternocleidomastoid due to bronchogenic carcinoma. Winterbottom sign, posterior triangle lymph node. Node of Wood, jugulo-digastric lymph node. Berry's node, jugulo-omohyoid lymph node. Delphian node, pretracheal node. Let's now see about axillary group of lymph nodes. There are 5 axillary lymph nodes: anterior, posterior, lateral, central and apical. एंटीरियर को हम पेक्टोरल बोलते हैं, पोस्टीरियर को सबस्कापुलर, लैटरल को ह्यूमरल.
अभी देखते हैं सेंट्रल एंड एपिकल नोड को हम कैसे एग्जामिन करेंगे. सो द थिंग इज दैट apical nodes are the final common pathway for all the axillary nodes. You have to examine the right axillary node with left hand except for humeral, that is the lateral group, which is examined with the same side of the hand. तो अभी देखते हैं the sequence of examining axillary lymph node. At first you have to hyperabduct the right arm of patient. Then place the right forearm of patient on your left forearm. Then insinuate your left hand fingertips deep in axilla of the patient. Using your right hand to apply pressure over the patient's shoulder. Feel for the apical lymph node using your left hand. Then central group can be felt just below the apical group. Anterior group felt on the anterior axillary fold, posterior group felt on the posterior axillary fold, and lateral group is felt with examiner's right hand by palpating over the patient's humerus. चलो अभी देखते हैं एपिट्रोक्लियर ग्रुप को हम कैसे एग्जामिन करेंगे. सो एपिट्रोक्लियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो में होते हैं, जो कि 4 to 5 सेंटीमीटर एबव द ह्यूमरल ट्रोक्लिया है. सो टू एग्जामिनिंग द राइट एल्बो यू हैव टू रेस्ट द राइट एल्बो ऑफ द पेशेंट ऑन राइट हैंड palm of the examiner and feel the lymph node with thumb or by placing 3 fingers. डी एस्पिन साइन जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगा, सो मैं ये वीडियो बना रही हूँ. सो व्हाट इज़ इट? ए ब्रोंकोफोनी और व्हिस्परिंग पेक्टोरिलोकी heard over the vertebral spines on the back below the level of tracheal bifurcation below the fourth thoracic spine in adults. It indicates tracheobronchial यानी mediastinal lymphadenopathy. चलो अभी देखते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड कहाँ कहाँ से ड्रेन होता है एंड एपिट्रोक्लियर ग्रुप को कौन कौन से ड्रेन आते हैं. सो एक्सिलरी लिम्फ नोड के लिए चेस्ट वॉल विथ ब्रेस्ट, पेरिएटल प्लूरा एंड अपर लिम्ब होता है. एंड एपिट्रोक्लियर के लिए लास्ट 2 to 3 फिंगर्स या फिर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड.